हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार्ट ऑफ द डे। माई सेल्फ राइम आसम रजा फ्रॉम MarketSmith इंडिया। सो आज के चार्ट ऑफ द डे के लिए मैंने सेट किया दो स्टॉक। वन इज मंगलम सीमेंट एंड द सेकंड वन इज आइनॉक्स ग्रीन। सो लेट्स सी हाउ दिस टू स्टॉक्स आर लुकिंग ऑन द चार्ट। सो ये मंगलम सीमेंट का डेली चार्ट है और यहाँ देख सकते हैं कि द स्टॉक वाज इन द कंसोलिडेशन फेज फ्रॉम द पास्ट फ्यू वीक्स, स्पेशली फ्रॉम 4 सितंबर, और उसके बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ एंड इट हैज़ कंटिन्यूड फॉर ए वाइल। एंड बट रिसेंट यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राइस एक्शन यहाँ से जो एक देखने को मिल रहा है फ्रॉम 21 नवंबर ऑनवर्ड्स, थोड़ा यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है और यहाँ से स्टॉक थोड़ा ऊपर जाने लगा है। और रिसेंटली फ्रॉम द पास्ट 2 days देर हैज़ बिन सम बाइंग इंटरेस्ट विथ अबव एवरेज वॉल्यूम, और आज के ट्रेडिंग सेशन में द स्टॉक हैज़ गेन्ड अराउंड 5% with above average volume, and it has also reclaimed its 100 DMA as well. So currently the stock is trending above its all key moving averages, and by अगर इसकी बात करें buyer demand की, so it has buyer demand of B, and if you look at its number of funds holding, so it has increased to it has actually decreased to 2.22%. नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज आइनॉक्स ग्रीन। सो आइनॉक्स ग्रीन में भी थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखने को मिला फ्रॉम 13 सितंबर ऑनवर्ड्स, और 13 सितंबर के बाद थोड़ा स्टॉक हैज विटनेस प्रॉफिट बुकिंग एंड इट हैज ऑल्सो ब्रीच इट्स ऑल की मूविंग एवरेजेस। It has also breached 200 DMA as well. But from the past 1 week, there has been some improvement in the price action. And आज के trading session में the stock has formed a big bullish candle with above average volume and also reclaimed its 200 DMA. So that is a positive sign, or we can say that trend reversal has taken place. If you look at its buyer demand, so its buyer demand is B minus, and if you look at its number of funds holding, so funds holding has increased significantly, we can say, because there is a gain of around 150% in the fund holding in the last quarter. So आज के लिए इतना ही। We'll meet again with another stocks and another charts next day. Thank you so much for watching the video.